Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार, हाजिर हैं हम मार्केट मंत्र के एक और ताजा अंक के साथ। इस कार्यक्रम में देश विदेश की आर्थिक खबरों का जायजा लेंगे, साथ ही नजर डालेंगे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय शेयर बाजारों के चढ़ते उतरते ग्राफ पर। साथ ही बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आज क्या हाल रहा। और खबरों की बारीकियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपलब्ध हैं सीनियर इकोनॉमिक जर्नलिस्ट और एनालिस्ट एसपी शर्मा साहब। शर्मा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया, थैंक यू। And now let's begin today's edition with the headlines in English. Union Minister Nitin Gadkari stresses on the use of biofuels for energy independence and reducing logistic costs. India's exports grew by 4.8% during the April to September period, reaching over $390 billion. And domestic benchmark indices close in red. Sensex slips 0.89%. Nifty loses 221 points. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ईंधन की कीमत कम करने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए जैविक ईंधन के इस्तेमाल बढ़ाए जाने पर जोर दिया है। भारत के निर्यात में पहली छमाही में 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई, जो $390 अरब से अधिक की रही। और घरेलू शेयर बाजारों में आज गिरावट, सेंसेक्स 81,006 पर रहा तो निफ्टी 24,749 पर। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ईंधन को लेकर ऊर्जा आत्मनिर्भरता को विकसित करने को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। दरअसल सरकार मलेशिया से ली गई अल्ट्रा एनफोर्समेंट कंक्रीट तकनीक के जरिए पुल और मेट्रो निर्माण की लागत को 25% तक कम करने पर काम कर रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान ये बातें कही। श्री गडकरी ने कहा कि बायोडीजल और वैकल्पिक ईंधन के निर्यात की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि 22 लाख करोड़ रुपए की लागत और लगभग सभी विश्व स्तरीय वाहनों की उपलब्धता के साथ भारत ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। मंत्री जी ने कहा कि ये उद्योग देश में लगभग 1,50,00,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराता है। 2 दिन के अंतर्राष्ट्रीय मेथनॉल सेमिनार और एक्सपो 2024 के दौरान दुनिया में मेथनॉल उत्पादन, अनुप्रयोग और संबद्ध तकनीक विकास से संबंधित परियोजनाओं, उत्पादों और अनुसंधान तथा विकास की पहलों की प्रगति के बारे में चर्चा की जाएगी। सेमिनार का मुख्य उद्देश्य विश्व में ऊर्जा क्षेत्र में मेथनॉल की भूमिका और हरित शिपिंग में कम कार्बन ईंधन के रूप में मेथनॉल के उदय के बारे में जानकारी देना है। Dr. Sharma, this is a very good progress that we're making when it comes to methanol, because this highlights how the automobile industry in the world is going to benefit from it. And for India, the 25% when it comes to the cost reduction it will bring in construction of bridges and metros is a big boost. It gives a big impetus to us. Yes, this is a big boost because we have to reduce the cost of projects actually. And that is a great development, that 25% is the benefit of this use of methanol, and biofuels are becoming more and more progressive in the economy. So going forward, we are expecting that this will continue and impact more the cost of doing business in the country, and the cost of doing business will be coming down with the use of such kind of fuels, biofuels.
Okay. So what do you expect in the role of methanol in the world energy transition and the rise of methanol as a low carbon fuel in green shipping? Yes, because now every country is focusing more on the green technologies and clean technologies and green fuel. So this is a great development, and going forward, as we have to achieve the net zero by 2050, so we have to move forward with the use of such kind of developments and the biofuels. Okay. Thank you. Moving on, India's exports grew by 4.86% in the April to September period in 2024, reaching $393.22 billion, up from $375 billion in the same period last year, according to the Ministry of Commerce and Industry. Merchandise exports for the first half of this fiscal year were valued at $213.22 billion, a slight increase of 1.02% compared to the previous year. Services exports grew by an estimated 9.81% during the same period. In September alone, India's total exports, including merchandise and services, were estimated at $65.19 billion, showing a growth of 3.76%. Key drivers of this growth included engineering goods, chemicals, plastics, pharmaceuticals, and textiles. The top 5 export destinations with positive growth were Netherlands, UAE, US, Brazil, and Japan. Federation of Indian Export Organizations President Ashwani Kumar said, the rise in merchandise exports despite geopolitical tensions and economic challenges signals a positive revival. Dr. Sharma, this again augurs well for the Indian economy as the exports grew by 4.86% in just April to September period. Yes, that is a great development once again, as exports are a major growth driver of the Indian economy now, contributing significantly in the forex market. So this growth at 4.8% is very, very promising despite the global headwinds, despite the economic challenges, despite the slowdown in the many economies in the world economic system. Our exports remain intact. That is the resilience of our exports in the global markets. And exports are rising every year, starting from 2021, when the exports were less than $500 billion. Then in 21-22, exports were at around $650 billion, more than $650 billion. Again in 22-23, exports were more than $750 billion. And last year also, exports were more than $750 billion at $778 billion. So now we are expecting with this growth trajectory that the exports are more than $390 billion in the first 6 months. So we are expecting that exports will be at around $800 billion for the full year. So that is the expectation from the trend of the first 6 months, that our export trajectory is going to become robust once again in the current financial year. Dr. Sharma, noteworthy is the fact that services exports grew by 9.81% during this period. That speaks volumes for the services sector. Yes, services exports are increasing more than the merchandise exports, because the demand for services in the advanced economy is increasing. In the post-COVID years, we have seen a strong growth in the services exports, these were stagnated before the coronavirus, like in 1920. The growth was not that much higher, but now the services exports are increasing significantly in the double digits in the post-COVID years. And the current year also exports are at around 9%, growth is 9%. So that is the, I believe, the promising number that services are significantly supporting the overall exports trajectory in this difficult time. So what do you think are the reasons? It's we are very competitive in various... Yes, we are very competitive. Our services... What about the quality and the brand equity of India? Yes, our services exports, I would say that we have a large chunk of the professionals, technocrats, and the best engineers, best consultants. So we have a good growth in such kind of professions, and that's why we are becoming more and more competitive
in the global marketplace, particularly in advanced economies, and we have competitive prices also. So that's why the services exports are gaining more and more pace in many economies. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में आज मलावी पहुंच गई हैं। किसी भारतीय राष्ट्रपति की मलावी की ये पहली यात्रा है। मलावी पहुंचने पर राष्ट्रपति का भव्य और पारंपरिक ढंग से स्वागत किया गया। 3 दिन के मलावी प्रवास के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू का द्विपक्षीय और शिष्टमंडल स्तरीय बैठकों तथा भारतीय समुदाय के साथ बातचीत का कार्यक्रम है। डिटेल्स यहां जानते हैं। President Draupadi Murmu, who is on a 3 days visit to Malawi as part of her 3-nation visit, had addressed today the India-Malawi business meeting in Lilongwe. She had addressed the business community of both the countries, and she said that she's more than happy to meet them, and along with them she said that already both the countries are sharing a very cordial and strong economic relation, but there is a huge potential to be tapped, and presently India is a major trading partner and an investor in Malawi, and the coming days will be seeing more bilateral and delegation level meetings as part of her visit to the country, and these meetings will definitely have a greater impact on the economic relation between the two countries, impacting on a brighter side on the trade and investment between both the countries for sure. And further on, President also urged the business community in both the countries to continue to work in synergy and to better the economic relation between India and Malawi. Meanwhile, Secretary Minister of External Affairs Arun Kumar Chatterjee today briefed regarding the President's visit to Mauritania last day. In connection with the same, Secretary said that apart from the 4 MOUs that were signed between the two governments, that is enhancing on the diplomatic relation and the cultural exchanges between the countries, a private MOU was also been signed focusing on the investments and on the areas of mine. और अब बात करते हैं घरेलू शेयर बाजारों की। घरेलू शेयर बाजारों में आज गिरावट रही है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 494 अंक गिरा और 81,006 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 221 अंक की गिरावट के साथ 24,749 पर रहा। विस्तारित बाजार में बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप में 1% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स पैक की 30 कंपनियों में से 9 के शेयर आज गिरावट के साथ बंद हुए। डिटेल रिपोर्ट राजेश लेख के साथ। The domestic benchmark indices today closed in red as the BSE Sensex lost 494 points to close at 81,006, and the NSE Nifty ended with 221 points down to settle at 24,740. In the broader market, at the BSE, mid-cap and small-cap indices shed more than 1% each. In the Sensex index, 9 out of 30 companies ended in negative territory. Among the laggards, Nestle and Mahindra both lost 3.3% each. Ultratech shed 2.7% and Bajaj Finance fell 2.2%. Conversely, in the top gainers, Infosys increased 2.5%, Tech Mahindra gained 2.3% and Power Grid added 1.3%. In sectoral indices of the BSE, 18 out of 20 sectors logged losses. Among the top laggards, Realty declined 3.7%, auto slipped 3.4%, and consumer discretionary was down by 2.45%. In the top gainers, information technology added 1.1% and tech rose 0.5%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 1,272 companies advanced and 2,890 declined while 102 remained unchanged. और रुपया आज मजबूत हुआ है। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में 8 पैसे की मजबूती आई। $1 की कीमत 84 रुपये 7 पैसे रही। डॉलर इंडेक्स 67 दिवसीय कारोबार के दौरान 103.5 के स्तर पर रहा। अब शर्मा साहब से बात कर लेते हैं। आज के डोमेस्टिक जो हमारा शेयर बाजार है, थोड़ी सी गिरावट रही है, मामूली जो आमतौर पर ट्रेडिंग के दौरान होती है। ओवरऑल मार्केट सिनेरियो अब जो है, इस पे आपका क्या टेक है, खास करके ऐसे समय में जबकि पिछले हफ्ते में इसमें काफी भारी गिरावट आई थी। धीरे धीरे मार्केट संभला है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि निफ्टी 25,000 का जो एक रेजिस्टेंस उस पे है, कहते हैं उससे नीचे बना हुआ है।
कितने समय में उम्मीद कर रहे हैं कि फिर पार कर लेगा? देखिए, मार्केट्स एक तो वॉलेटाइल हैं, उसके लिए कारण है कि जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो डीपन हो रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट्स के ऊपर इम्पैक्ट है, मार्केट्स में अनसर्टेनिटी है जी। और दूसरा जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स हैं वो भी नेक्स्ट है, कोई उनमें कोई खास कुछ कंपनीज ने जो मुनाफा है उतना नहीं दिखाया है, कुछ कंपनीज ने अच्छा दिखाया है, तो नेक्स्ट रिजल्ट आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन मोड में है। मार्केट्स को हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में शायद ये निफ्टी जो है 24,000 और 25,000 के बीच में कंसोलिडेट करेगा, और उसके बाद क्योंकि अभी आने वाले टाइम में कुछ और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, कुछ इलेक्शंस हैं स्टेट्स में, उसके बाद फिर बजट की तैयारियां हैं, तो मार्केट्स अभी लगता है कि इस लेवल पे 24,000 25,000 का निफ्टी जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में कुछ समय के लिए रह सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई नेगेटिविटी की बात नहीं है कि मार्केट्स में कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी या कुछ ऐसा कुछ नेगेटिव है या फिर जो स्टोरी है उसमें कुछ इम्पैक्ट है। मार्केट्स विल रिमेन इंटैक्ट एंड मार्केट्स विल मेक न्यू हाइज वंस अगेन इन द coming months. So, Dr. Sharma, there are three things that I want to draw your attention to. One is the market sentiment being weak because the sales during this festive season is not very encouraging. The fact by Bajaj Auto's very cautionary statement regarding this. The second concern is of high stock valuations. And the third is about the ongoing outflow of foreign investment. They all are contributing towards a downward pressure on the indices. What's your take? Yes, I totally agree. I mentioned all these factors directly or indirectly because global headwinds, and that's why the capital flow is not that much intact in these days because of the deepening of the geopolitical developments. And I mentioned the mixed results are going forward because the corporate earnings are not that much strong, and because of the results you mentioned that festive season is not that much lucrative for the markets at this juncture. So going forward, I believe markets will consolidate at this juncture, at this level, somewhere between 24 to 25,000 in Nifty and somewhere between 81,000 to 82,000 Sensex. So that is the scenario expected in the coming times, and surprises may come any time. If something more strong happens in the economy or at the global front, or RBI starts cutting the repo rate, then that will be a great boost to the market, and the markets will once again jump to the new highs with the such kind of boosting factors. But now markets are in a mood of consolidation at these levels. So the withdrawal by the FIIs, how much do you attribute to the Chinese market? Because China has come up with a new plan for their markets. In fact, tomorrow I think they're going to come up with their figures as well, and they raise an expectation of 4.5%. The market doing as against 5% in the Chinese market. So how much is the stimulus that they have announced? And the detailing not being given, yet the FIIs are going towards China. I don't say that China factor will impact our markets, because stimulus or all these things or incentives are the different things, because ultimately growth has to be observed. We are growing fast, significantly fast as compared with China. In the next 5-6 years, on the figures provided by IMF, China will grow somewhere between 4 to 4.5%, and we will grow more than 6.5% on an average in the next 5-6 years. So there is a huge difference between the growth trajectory of both countries. So now we should not compare with China, because now we are totally different and our growth story is totally different, and we are resilient, significantly resilient as compared with China. So I don't see that China factor or China's lucrative. Dr. Sharma, was our markets are now but I'm saying the FIIs are more moving towards China. Maybe for some time, but
in the long term, in the coming times, they will come back to India because our story is not only for months or the quarters. Our story is for decades. Long term. We have to move forward to our Viksit Bharat by 2047. So our growth story will remain intact in the next 2-3 decades. So there is no challenge from anyone or the FIIs moving here and there, but ultimately they will come to India because they are finding the promising growth partners and we are one of them. देखिए शर्मा जी, ये कहें तो इसकी एक तरीके से शुरुआत भी हो चुकी है। बहुत कम समय में चीन में जो इन्वेस्टर्स गए, चीन ने जिस तरीके से स्टिमुलस दिया और उसका एक फायदा उठाने की कोशिश की, जो निवेशक पर्टिकुलरली एफपीआईज गए हैं, उनका भी अगर हम उसका ग्राफ देखें तो भरोसा बहुत ज्यादा बरकरार नहीं रहा है। और आप ठीक बता रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में सारे के सारे फिर से वहां से वापस आएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हेवन जो है और शाइनिंग जो स्पॉट है वो इंडिया ही है इस समय। जी बिल्कुल, चाइना का जो ऐसे एफर्ट्स हैं वो सस्टेनेबल नहीं होते हैं। चाइना ऐसे एफर्ट करता है, कुछ समय के बाद जब उसको लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं भारत की तरफ जा रही हैं, कंपनीज भारत की तरफ रुख कर चुकी हैं, बहुत सारी कंपनीज वहां पे अपनी प्रोडक्शन शुरू कर चुकी हैं, खासकर मोबाइल फोन्स में ही आप देख लो, नाउ वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सो चाइना ऐसे समय पे थोड़ा इस प्रकार की जो चीजें हैं वो क्रिएट करता है, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होती। एंड ऑफ द डे इन्वेस्टर हैज टू कम टूवर्ड्स इंडिया। बिल्कुल, और मोबाइल के फ्रंट पर तो सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला किया है। कई बार कई लोग ये आरोप लगा देते थे कि हम सबसे बड़े हैं लेकिन हम केवल यहां असेंबल कर रहे हैं, तो उनके लिए अब एक जवाब ये आ रहा है कि अब न सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां जो सैमसंग है, एप्पल है, वो भारत में ही सिर्फ असेंबलिंग अब नहीं होगी, भारत में ही सारे सामान इसके बनाए जाएंगे और यहीं का वो पूरी तरीके से मोबाइल होगा। और वो दिन समय दूर नहीं जबकि भारत इस मामले में दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे होगा मोबाइल निर्माण के क्षेत्र में। वापस आते हैं शर्मा जी मार्केट्स पे। जो आज के लैगार्ड्स रहे उसमें नेस्ले का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि उसमें आज थोड़ी ज्यादा गिरावट हुई है 3.3%। जी, तो 2 सेक्टर्स के बारे में, एक तो एफएमसीजी का क्या रहने वाला है आपकी निगाह में, और दूसरा कि फूड प्रोसेसिंग से संबंधित जो सेक्टर्स हैं, जो कंपनियां हैं, उनके शेयर कैसे रहेंगे? देखिए, एफएमसीजी को हम एक ऐसा सदाबहार सेक्टर मानते हैं, लेकिन इसमें कई बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है, टाइम टू टाइम थोड़ा सीजनल होती है वो। कई बार जैसे अब हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि डिमांड कई बार बहुत इंटैक्ट होती है, खासकर फेस्टिव डिमांड, और कई बार थोड़ी सी उसमें स्लो डाउन रहती है, तो जिस वजह से एफएमसीजी सेक्टर के ऊपर उसका तुरंत इंपैक्ट आता है। तो ऐसी मुनाफा वसूली या फिर ऐसा स्लो मोड कई बार एफएमसीजी में देखा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो कंज्यूमर डिमांड है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फूड प्रोसेसिंग की जो आपने बात की, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर इज अ ग्रेट ग्रोथ स्टोरी आई वुड से, क्योंकि आने वाले टाइम में जिस तरीके से फोकस रहा है, जिस तरीके से हम हर एक साल अपनी नई फूड ग्रेन प्रोडक्शन कर रहे हैं, और जिस तरीके से जो रिफॉर्म्स हैं, वो सबका जो अंजाम है, हमने देखा कि हमारे जो एक्सपोर्ट है $30 बिलियन से बढ़ के हम $40 बिलियन हुए 2021-22 में। 22-23 में हम $50 बिलियन हुए। लास्ट ईयर फिर हम 23-24 में लगभग $50 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। तो आने वाले टाइम में प्रोजेक्शंस हैं कि हम $100 बिलियन तक अगले 4-5 साल में एग्री एंड फूड प्रोसेसिंग के एक्सपोर्ट करेंगे। और सरकार का जो मेजर फोकस है, जो रिफॉर्म्स, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और जो खास करके जो रूरल इकोनॉमी के ऊपर जो डेवलपमेंटल पॉलिसीज है, वो सब जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को बड़े अच्छे से बूस्ट कर रही है। तो आने वाले टाइम में मेरा ये मानना है कि दिस इज द नेक्स्ट आईटी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बिकॉज वी डोंट हैव टू इंपोर्ट एन इनपुट। हमारे पास अपना सब कुछ है, हमारे पास अपने इनपुट्स है। वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी, वी हैव अ ग्रेट एडवांटेज इन द ग्लोबल मार्केट। कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ा है। कंजम्पशन नॉट ओनली इन इंडिया, पूरे वर्ल्ड में जो इसकी कंजम्पशन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा लगभग कोई $50 मिलियन का एक्सपोर्ट होता है। पूरे वर्ल्ड में इसका जो एक्सपोर्ट है वो 1500 बिलियन के आसपास। अब आप देखिए कि वी आर लेस देन 1% ऑफ द टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स। हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी है, मैं उसको अपॉर्चुनिटी बताऊंगा कि
हम इसका जो एक्सपोर्ट है उसको 100 बिलियन, 150 बिलियन, 200 बिलियन डॉलर तक भी लेके जा सकते हैं। और हमारी प्रोजेक्शन है कि विकसित भारत बनने तक हमारी जो ये एक्सपोर्ट वॉल्यूम है, जो वैल्यू है वो लगभग कोई 500-600 बिलियन डॉलर तक जो जाएगी जब हम 34-35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने। Dr. Sharma, it is said that our stocks are overvalued. So do you think they are overvalued, and in the coming days, what do you expect from the market? Because as we discussed in our last session also, I mentioned that sometimes the stocks are overvalued or sometimes they're undervalued. That is the market dynamic actually. Sometimes people buy at higher prices also and they book the profits. So this equilibrium will come automatically in the coming times, and the growth story of the shares in the food processing companies will remain continue. जी, हम एशियाई बाजारों की बात करते हैं। 5 प्रमुख एशियाई सूचकांकों में से 4 आज गिरावट के साथ बंद हुए हैं। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और हांगकांग का हैंगसेंग 1% से अधिक फिसला है। जापान का निकेई सूचकांक 0.69% और दक्षिण कोरियाई बाजार का कॉस्पी 0.04% नीचे रहा। हालांकि सिंगापुर बाजार का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स करीब 1% बढ़ा है। यूरोपीय बाजार भी तेजी पर हैं। लंदन का FTSE 100 0.4% तेजी पर कारोबार कर रहा था। जर्मनी का डैक्स 0.8% और फ्रांस का कैक 40 1% से अधिक उछाल के साथ कारोबार कर रहा था। The Dow Jones Industrial Average rose on Wednesday and closed at a record high, and Wall Street's 2 other benchmark indices also ended higher, weathering declines in mega-cap tech shares thanks to small caps gains and financial shares buoyed by strong earnings. The Nasdaq Composite rose 0.2%, the Dow Jones Industrial Average advanced 0.7%, and the S&P 500 finished up 0.4%. सोने की भी बात कर लें शर्मा जी से। Okay. The oil prices held near a 2-week low on Wednesday after dropping about 7% over the prior 3 days on a forecast of less oil demand growth and reduced concerns that Middle East conflicts will disrupt supply. Brent futures settled at $74.40 per barrel, while U.S. West Texas Intermediate crude settled at $70.56. Given the Middle East conflicts and talks of supply disruption, do you think that the dollar will continue to be range bound between 75 or 80, or between 70 or 75? Which side will it go to? There may be sudden spike in the crude prices because of such kind of tensions, but on an average, prices will average at around $75 per barrel in the next 2-3 months. Okay. That is my validation. और सोने की बात करेंगे। इसकी कीमतों में आज बढ़ोतरी रही। 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 76,009 रुपए रही। हालांकि चांदी की कीमत में 0.5% की गिरावट रही है। 1 किलो चांदी 91,890 रुपए में बिकी है। एमसीएक्स में सोने की कीमतें तेजी पर थीं। दिसंबर अनुबंध वाले सोने के भाव 76,786 रुपए पर चल रहे थे और दिसंबर वाली चांदी 0.5% की गिरावट के साथ 91,660 रुपए पर चल रही थी। वक्त बहुत कम है। शर्मा जी, आपसे बस टिप्पणी सोने पर चाहेंगे। हर कोई यही पूछ रहा है 1 लाख कब हो जाएगा ये, और अभी यहां से गिर सकता है। सोने के लिए मैं बहुत साल से बुलिश हूं और माई मूड रिमेन सेम। आने वाले टाइम में जो चमक है सोने की और ज्यादा बरकरार रहेगी, और जो आप 1 लाख रुपए की बात कर रहे हैं वो भी आपको ज्यादा दूर नहीं है वो दिन जब आपको। तो सोने में इन्वेस्टमेंट सेफ हो सकता है। बिल्कुल। समय अब खत्म हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी शर्मा आपका स्टूडियो आने और हमसे बातचीत। Thank you so much for being with us, Dr. Sharma. And before we close, the headlines once again. Union Minister Nitin Gadkari stresses on the use of biofuels for energy independence and reducing logistic costs. India's exports grew by 4.8% during the April to September 2024 period, reaching over $390 billion.
The domestic benchmark indices close in red. Sensex slips 0.89% and Nifty loses 221 points. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Namaskar.